Okay, very good morning to all of you. I could see that most of you have joined. There are some who are still coming. Let's see. I hope I'm audible to all of you. And my screen is also visible, I guess, to all. Yes, I could see that. Thank you. Thank you. Wonderful. So now we'll have some participants who are like a bit late. So they are admitted, I guess. So now, what we had yesterday, I guess, was a few of you made your 1 minute presentation. We'll continue that. But what I could see is that some of you need some help in terms of like, sir, I don't know how to start, or I don't know how to say this in English, or you may not know how to talk about your opinion, right? So all those things that we did discuss in some of the sessions. So before we start today, I just want to share a few of the expressions, few of the say the sentences that you can use. You have to of course modify it. It's not cut and paste, but you can talk in terms of using these expressions. So today, those who wanted to start, all the very best for them. You just need to raise your hand and I'll call you one by one. But before I invite you, I just want all of you to have a look at let me find out. Yes, so here I just going to share some of the expression which I think you should know and you should use. Okay, tell me when you are able to see the screen that I'll share with you. Okay, can you look at the presentation, useful expressions? That's the slide I shared. Can you see that? Wonderful. Now, I just want you all to know that whenever you speak about anything formally, or when you are, let's say, writing about something in a formal manner, not informally. Informally, you can say hi to your friends, and that's not very systematic, right? When you are speaking or writing something systematically, there are 3 stages, which are very simple. I'm sure all of you have heard that and all of you have known that. So let's see if you could get it. Okay. Okay, do you know this word? I wrote 3 words in our chat, and let me know if you could see these 3 words I wrote in the chat to everyone. Right? Could you see those words? Have you heard these 3 words? These 3 steps or stages? Yes, sir. Yeah. Did you see that in the chat? There are many yeses. Hi, sir. Good morning. Yes, a very good morning. Good morning. सर मेरा चैट काम नहीं कर रहा है. Your chat is not working. ठीक है, तो आपके लिए बोल देते हैं. There are 3 words. First is introduction. Second is main body. Third is conclusion. ये सुने हैं? जी. They are very popular, very famous. स्कूल के दिनों में आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे लिखना है ना? So that is what I want you to remember, and then try and see what you do. ठीक है? So that's the 3 stages that are there. अब जब आपने कुछ लिखना है या कुछ बोलना है formally, so this is what you can use. These are the words that you can use while doing it. So for example, आपने कोई बात शुरू करनी है, इंट्रोडक्शन के. देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ. राइट? हाउ डू यू स्टार्ट? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन का नाम सुना है. सो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होती है? फर्स्ट इंप्रेशन इज, व्हाट इज फर्स्ट इंप्रेशन? हैव यू हर्ड दैट? चैट में लिख रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है वो लास्ट इंप्रेशन होती है ना? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है वो फर्स्ट इंप्रेशन होती है ना? लास्ट इंप्रेशन होती है. उसी के तो फर्स्ट और लास्ट बोलते हैं. दे आर ऑपोजिट. बट दैट्स ट्रू दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप
जैसे किसी को मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम एक इम्प्रेशन बनती है आपकी अच्छी या बुरी, राइट? सो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक वो अच्छी या बुरी रहती है ना? बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट अ टॉपिक, दैट मीन्स हाउ विल यू स्टार्ट. आपका फर्स्ट सेंटेंस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी with this. So what I'm going to share is a few expressions which you can use. आप जब भी बोलने खड़े हों, आपके किसी फॉर्मल बोलना है या लिखना है, आप ये expressions यूज कर सकते हैं, है ना? So for example, first is ideal you start with greetings. Greetings क्या होती है? Good morning, good afternoon, hello, how are you, etc. ये सारे आप वर्ड यूज कर सकते हैं. हाई जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है. अदरवाइज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो है फॉर्मल ग्रीटिंग. कैन ऑल्सो यूज हेलो फ्रेंड्स, हेलो कलीग्स, हेलो डेलीगेट्स, राइट? ऑल दोज फॉर्मल एक्सप्रेशंस. सो हेलो तक फिर भी ठीक है. हाई जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है. तो आप देखिए वेयर आर यू स्पीकिंग, है ना? अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द ग्रीटिंग. ठीक है, ग्रीटिंग होता है कि नमस्कार, जय श्री कृष्ण, right? All these are the greetings that we have in our culture. Their culture, English culture, they have greetings such as good morning, good afternoon, right? Or good night maybe. But जब मिलते हैं तब you usually say good morning, good afternoon or good evening, depending on the time of a day. Then opening remarks. आप कैसे शुरू करेंगे? So I'm here to make my presentation, for example. I'm here to make my classroom presentation. I'm here to make my term work presentation. I'm here to make my annual presentation. है ना? इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जब आप शुरू करते हैं कि फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, respected sir, today I'm here to make my presentation or today I'm going to make my just 1 minute presentation. ठीक है, हो गया आपका. तो वो ये कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज सच एज आई वुड लाइक टू प्रेजेंट history and development of Bluetooth. Today I would like to tell you briefly about television. ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो. और यू कैन से आई विश टू टेल यू समथिंग अबाउट पेन ड्राइव, समथिंग अबाउट सेल फोन, समथिंग अबाउट सम मशीन, है ना? तो ये आप यूज कर सकते हैं. थर्ड और नेक्स्ट यू कैन यूज होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. जब आप कहते हैं कि मैं आपको टेलीविजन के बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, है ना? So how would you say it? Today I am going to tell you something about X. I hope you will find it interesting. I hope you will find it useful. ठीक है? So that you can use. Or you may also say, first of all, I'll tell you which was the first television or first inventor, who was the founder, who invented, etc. Invented किसने इसकी आविष्कार किया, है ना? तो वो आप यूज कर सकते हैं in terms of doing this first half. ठीक है? So what are they? These are the expressions to start with. तो आप start कैसे कर सकते हैं? You may start by greeting or you may start by opening remarks such as I am here to tell you about, today I would like to tell you about, or I would like to tell you about, I wish to tell you about. इसमें से कोई एक या दो आपको जो ठीक लगे वो यूज कर सकते हैं, है ना? ऑफ कोर्स आपको एडिट करना होगा कि आप किस बारे में बोलने वाले हैं, है ना? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्स टेक्नोलॉजी और वाई टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने करनी है, आप कर सकते हैं. तो आपके स्क्रीन पे ये मैं 1 मिनट के लिए रखता हूँ ताकि आप देख पाएं, समझ पाएं, और उसके बाद मेन बॉडी जो आपका मेन टॉपिक होगा उस पर आप आएंगे. सो हाउ वुड यू यूज एंड व्हाट आर द एक्सप्रेशन जहाँ आपको अलग तरह के सेंटेंसेस चाहिए होंगे, सो वो कैसे यूज करेंगे. तो फर्स्ट हुआ ग्रीटिंग, which could be good morning, good afternoon, or it could be hello friends or hello say colleagues. Colleagues माने जो साथ काम करते हैं उसको colleague कहते हैं. तो वो कह सकते हैं आप फिर ये एक्सप्रेशन जो हमने बात करी वो, है ना? तो इतना ठीक है. CSC जो है वो जय इट्स अ कंपोनेंट दैट वी हैव इन मारवाड़ी कॉल कंटिन्यूअस सेमेस्टर इवैल्यूएशन. तो वो आएगा आपको आगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन. सो क्यों कर रहे हो आप? टर्म वर्क है, एनुअल वर्क है, क्लास वर्क है, कंटिन्यूअस सेमेस्टर इवैल्यूएशन है ना? सो दैट्स द टर्म व्हिच इज यूज्ड इन मारवाड़ी से इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. सो आपका सेमेस्टर पूरा होता है, so throughout your semester you have some presentations. So the CSC is one such component of your CSC. So Jay, I think I told you. Yes, he said okay, fine. So that was introduction. After the introduction you will have main body. So in the main body you may talk about the topic, you may highlight
things you may give your point of view, that is your opinion, right? So वो कैसे कर सकते हैं? So you may say, on one hand we have old kinds of televisions, on the another hand we have LCD and LED kinds of television. On one hand we have traditional cell phones, on the other hand we have smartphones, है ना? On one hand we have Android application based smartphones, on the other hand we have Apple kinds of cell phones, you know. तो आप दो चीजें कंपेयर करते हैं. You may use, on one hand we have this, on the other hand we have that. ठीक है? So on one hand we have students from Gujarat, on the other hand we have some students from Bihar, है ना? तो जब दो से विषय को या दो पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, then you can use on one hand this, on the other hand that. Only care you have to take is कि अगर दो पार्टी है तभी ये यूज कर सकते हैं. अब मानो कि आप बता रहे हैं कि 4 या 5 let's say kinds of engineering, you are talking about the kinds of engineering that's there. So you will start by saying, on one hand we have mechanical engineering students, on the other hand we have civil engineering students, on the other hand we have chemical engineering. So then if there are more than two parties, तो ये expression use नहीं होगा, क्योंकि you have two hands, and you can talk about, on one hand we have engineering students, on the other hand we have electrical students. For example, in this class I guess students are from two branches, right? So on one hand we have IT engineering students, on the other hand we have electrical engineering students. तो थर्ड ब्रांच नहीं है तो आई कैन यूज वन हैंड सेकंड हैंड, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते. और जब आपने कुछ ऐड करना है, देखिए लास्ट आपने क्या करा था, यू सेड से फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हुआ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन. First of all, I would like to introduce you to Graham Bell, the inventor of telephone. And then, moreover, then you add the other things by saying. So on one hand, we have old version telephones, and on the other hand, we have these different kinds of telephones. So that's there. Or you may use moreover, further. You know, you are adding something. जब आप add करते हैं, जो आपने बताया है information, then you are adding. Moreover, there are more kinds of say telephones, walkie-talkies, and all. So that also you can use further, moreover, etc. Now, this is very important issue, or this is very important feature of cell phone, or this is very important issue for the social thing or whatever, है ना? तो जो highlight करना है उसके लिए you can use this is very important, है ना? But you should use it nicely. Then comes highlighting. जब आप कुछ चीज highlight करना चाहते हैं, है ना, गौर से देखिए इसको, kind of thing. तो वो कैसे करेंगे? As you can see on my screen, I think some of you are sharing your screen. सर मेरा हेडफोन दिखाना चाहता हूँ या मेरा ये डिवाइस दिखाना चाहता हूँ. So तब आप कैसे बताओगे? As you can see on the screen, or as you can see on my say hand, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, right? So as you can see this on my screen, or now I would like to show you, or now I would like to present the new topic, और उसका एक अलग फीचर आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना? तो वो आता है एडिशनल के. नाउ आई वुड टेल यू अबाउट सेकंड फीचर ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है? सो वो आप यूज कर सकते हैं. एंड देन योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको क्या लगता है. सो यू कैन से, इन माय ओपिनियन दिस इज वेरी यूजफुल डिवाइस, इन माय ओपिनियन यू शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस डिवाइस, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है. सो दैट इज इन माय ओपिनियन. और यू कैन से अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स वेरी पॉपुलर. जब आप अपना अभिप्राय देते हैं, अपनी सोच रखते हैं, तो कैसे कहोगे? You can say, according to me, we should be careful while using social media, for example, है ना? तो ये आप यूज कर सकते हैं. और you can say from my point of view, कि मेरे दृष्टिकोण से ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है. मगर आपका ओपिनियन जो है, it should come at the end. You should not start with your opinion. You should start with the facts. कि देखिए ये हकीकत है, ये इसका फीचर है, इससे ये होता है, इससे वो होता है ना? जैसे कि ये जो फीचर है उससे आप किसी को कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी में आप बात कर सकते हैं, इसका ये फीचर है. मगर माय ओपिनियन इज दैट वी शुड डिपेंड लेस एंड लेस ऑन दिस टेक्नोलॉजी, अदरवाइज विल बिकम से विल लूज आवर इंडिपेंडेंस वगैरह वगैरह. तो वो जो भी आपकी सोच है, आप इसका एक्सप्रेशन का यूज करके बता सकते हैं, है ना? सो दैट्स द मेन बॉडी. फिर हुआ लास्ट पार्ट, हाउ डू यू कंक्लूड. अब पूरा कैसे करोगे, है ना? सो व्हाइल कंक्लूडिंग और पार्टिंग रिमार्क्स, पार्ट होना मतलब जुदा होना, पूरा करनी है अपनी बात कि चलो अब इस के कह के मैं रुकता हूँ, है ना? सो बिफोर आई कंक्लूड, आप सजेस्ट करोगे, देखिए मैं अब ये कंक्लूड करने वाला हूँ, है ना? इन द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, और इन ऑर्डर टू सम अप माई प्रेजेंटेशन, है ना? समिंग अप मतलब कंक्लूड करना, बंद करना, पूरा करना.
So, to sum up my presentation, I would like to tell you that cell phone is important, not important, whatever. है ना? Or at the end, finally, I'll tell you that, this is my observation, something like that. So वो आप remark में दे सकते हैं. And जो है वो कैसे करोगे आप? I hope you found it interesting, or I hope you found it useful. मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, kind of thing. So you can use this expression. You may also thank the audience. Thank you for listening carefully, or thank you for listening patiently or peacefully, or you may say thank you and thank you all. आई बात समझ में? सो ये जो है इसका आप यूज कर सकते हैं, इसको कॉपी और पेस्ट करके यूज कर सकते हैं. सिर्फ पेस्ट मत करिएगा, थोड़ा एडिट भी करिएगा कि आपके प्रेजेंटेशन में इसमें से कौन सी चीजें आपको काम लगेगी और कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं यूज करेंगे तो चलेगा. सो वो जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ द फ्रेजेस आपने करना है. आपकी जो स्पीच आप सोच रहे हो उसमें इसमें से कोई भी फ्रेज आपको यूजफुल लगे, यू कैन यूज, है ना. सो बिफोर आई इनवाइट फ्रेंड्स टू स्पीक, I'll give you a minute or two to have a look at these. और जब आप तैयार हो जाएं फिर I'll invite all of you to speak. जिसको बोलना है they are invited. आज जिसने कल बोला है और आज फिर से बोलना है they are also invited. मगर फर्स्ट चांस हम उनको देंगे जिनका टर्न कल नहीं आ पाया था, है ना. So you can use these expressions for that. So I'll keep each slide for at least 1 or 2 minutes ताकि आप देख पाएं, आप नोट कर पाएं, right? Screen I think सब देख पा रहे हैं. I think you are able to see the screen, all of you, है ना. Very good. So have a look at the screen and take note of these expressions. Okay, now we'll go for the second slide. And the last slide, how to end. Fine. So this is for your reference. Now I would want all of you to take a minute or two. Those who wish to participate, all the very best. Once you are ready, you can raise your hand and then we'll have your presentations. I'll keep these sessions here for one more time, very briefly, so that while speaking, you may use these expressions. Yeah, so those who are ready, just raise your hand or maybe let me know by chat and then we'll try. Yeah, please note, this will be your last chance because this is the last session, by the way. Yeah, so either you volunteer or I'll have to invite some of you. Best is you come. That's a democracy, When you raise your hand, it's democracy. When I raise my finger, it's autocracy. And autocracy is not a good government. So please volunteer yourself and let me know.
Okay. So I think I'll have to invite some of you. Fine. Poojan, do we have Poojan in the class? Poojan, are you there? Poojan Dunga? Poojan? Can you hear my voice, all of you? Poojan Donga, it seems not there in the class. And do we have Divyaraj Parmar? Divyaraj? Okay, you can hear my voice, but I could not see the volunteers. Yesterday, some of you did. I want some of you to try today as well, because that's the activity, right? So take your time and just once you're ready, let me know. Yes, you can hear me, but I just want you to participate as well. So who are there by choice? Yes, Jay Doburia, are you there? Yes, sir. Yes, Jay. Would you like to try? Okay, sir. If you want some time, you can take, or if you want to start, you are welcome. Mm. Good morning, sir. Good morning. Today I am here to make my task for 1 minute of in technology. Mhm. Today I am going to talk about wireless headphone. Okay, great. Go ahead. Nowadays we all can see this type of headphones everywhere. Mhm. So I am going to give you more information about Realme Earbud Neo, which I have. Oh, great, great. This earphone cost you of 3,000, but festival day is going on, Mhm. so you can purchase it for only 2,000. Okay. This Realme Earbuds Neo contain Mhm. instant auto connection, means that Google Fast Pair, Okay. and 13 large driver dynamic bass boost, Okay. and Okay. it also has super low latency mode. Okay. That means gaming mode. Mhm. It also has 17-hour total payback, intelligent touch Mhm. control, and you Okay. can easily connect it with Realme Link app. Great. And in these buds, it have a chip named R1 True Wireless chip, Okay. Okay. where you can connect it with Bluetooth, Okay. and Okay. it also have BT 5.0 version. You Mhm. can get this in three different colors: white, red, and green, and it is comfortable and lightweight. A Okay. single bud contain a single bud weighs only 4.1 gram, as light as a single sheet of a paper, and it is water resistance also IPX4, and you can get it from the any nearby store you, and in Realme store also. Okay. Fine. Fine. Thank, Yes. Thank you. So that was thank you, sir. Jay, right? Jay Doburia. Yes, sir. Okay. Thank you, Jay. So that was very detailed presentation. In case somebody wants to purchase the headphones, I'm sure Jay's information could help them. So thank you, Jay. Thank you. Okay, next Welcome, to sir. Jay, I think it was Miss Krishna who raised her hand. Did you raise your hand, Krishna? Or did I mistakenly saw your hand? Hmm. Okay, do we have Vivek Gupta? Vivek Gupta? Yes, sir. Yes, Vivek. Would you like to try? Yes, sir. Okay, okay, go ahead. Good morning. Good morning, sir. Good morning. I will tell you something about Bluetooth device. Okay, okay. You hope you will find it interesting. Very good, very good. First of all, I would like to introduce the inventor of Bluetooth device, Very good. Jab
Jaap Huston, the inventor of Bluetooth device. Very good. This is very important topic in class. Now I would like to show your presentation. I would like 1 to minute, sir. present to you, or I would like to show you. Show माने बताना, है ना? Yes, sir. Very good, Vivek. According to me, Bluetooth device is important for online class to hear Okay. voice. Okay. Hope you find it interesting. Thank you Very for good. listening Very carefully. good. Very good. Thank you. Yes. to all. Yeah, you are a perfect engineering material, because engineers, when they are given the parts, they can easily assemble it. You know, assemble अलग-अलग चीजों को लेके एक बनाना. So these are the say you know this jigsaw puzzle. If you have ever played jigsaw puzzle, there are pieces, separate pieces. If you arrange them in a proper way, you can see a complete picture. So these are like those say toys which are scattered. When you arrange it properly, तो आपको पूरा एक चित्र मिलेगा. So that's what Vivek could do very well. So thank you, Vivek, for your attempt. Now, do we have Priyanshu Wadir? Priyanshu, are you there? Yes, sir. Yes, Priyanshu. Would you like to try? Yes. Please try करिए. जितना भी आए, जैसा भी आए, try करिए, है ना? डरना मत. Okay. Yes, बच्चा, go ahead. Good morning. Good morning. Okay. I am here to make my 1 minute presentation. I would you like to presentation the hard disk. Okay. I wish you to tell you something about. I hope you will find it interesting and useful. Yes, very good. Hard disk is a electromechanical data storage device that store and relative digital data using magnetic storage and one more rigid repeatedly rotation patterns. Okay. Patterns are prepared with magnetic head usefully arranged on moving actual arm. Okay. The manufactured by first 24 December 1954. Okay. Great. Okay, and IBM team and by Ray Johnson on manufacture. Okay. And, and the minimum storage 16 bit 16 TB last 2019. Okay. And I hope you found interesting and useful. Thank you for listening. Wonderful. That was very brief and to the point. So thank you, Mr. Wadir. That was Okay, like thank you, sir. he used some of the very good phrases that were there on the screen. So that's wonderful. Okay, so now we have Thank you, sir. Hinal. Hinal, are you there, Hinal? Hinal Satodia, 46 number. Are you there, Hinal? Okay, I don't think she's there. Okay. Do we have Hemant Kumar? हेमंत कुमार सुन पा रहे हैं आपको? Yes, sir. जी हेमंत जी, would you like to make a presentation? Yes, sir. चलिए कोशिश करिए, जैसा भी आए आप ट्राई करिए. Okay, sir. जी. Good morning to all of you Good and morning. respected sir.
respected Mahir sir. जी. I I am here to make IT presentation. Okay. Uh, So, किस चीज पे करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन? Which is your object? My object is earphone. Earphones. Yes. Tell us about earphones. Device. Earphone device is helpful. Helpful. Here listening. Okay. Listening to any audio. Audio. Yes. Audio. Okay. Good going, Hemant. Audio. आप अच्छा कर रहे हो. Audio listening to earphone helpful device. It is helpful device. Yes. Audio listening. Okay, हेमंत कुमार, before you come to college, आप कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? Before college, अब तो आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज से पहले कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? हाई स्कूल. कहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए? हाई स्कूल में. वेरी गुड, ठीक है. हाई स्कूल. यस, वेरी गुड. आपने अच्छी कोशिश करी, सो वंडरफुल, है ना? ये अच्छी चीजें करनी चाहिए हमको. तो यू ट्राइड वेरी वेल. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन. ठीक है. I could see 2 hand raised. I have but limited time, so I'll invite 2 of you. I could see Shubham. Yes, sir. Yes, Shubham. I would like to try. Good morning, sir. Good morning, guys. Today my topic is very common thing about pen. My topic is pen. As we all use ball pens today, but do we know from where the ball pens was discovered? Before a long time ago. Yes, Shubham, go ahead. Have ball pens. We all used to a fountain pens. Ladies Law Joseph Bureau, a Hungarian man who was a journalist and painter by profession. Ladies Law Joseph Bureau was troubled by the sports causes by fountain pens. Then an idea came to his mind: why not make a pen that gets the ink quickly and does not even catch spots? And in 1931, he makes pen in America. That's all. Thank you. Wonderful, short but sweet. So that's wonderful. Next to Anand, I could see the hand raised of Deepak. Yes, Deepak Anand. Yes, sir. Sorry for late, sir. But good morning, all of you friends and my dear sir. I am here to make my annual presentation on TV. Yesterday I also told on TV, but today I am on presentation on TV. First of all, I want to say that in England, 1878, J.L. Baird
successfully transmitted the first TV picture. This television was quickly replaced by the electronic television in the year 1927 when Philo Farnsworth successfully demonstrated electronic television in San Francisco. I am going to give more important points about television. That's first one is after the CRT color TV came on the market, they replaced the black and white TV. Then second one is the name of the first RCA color TV set is the CT100. Now, in modern TV comes with LCD and LED technology with low power consumption. On the TV, we can watch movie, cartoons, news, dance, and dramas, and listen to the songs on various channels. We can explore, learn, and know many things with the shows on television. Today, TV has become the part of daily life, but my opinion is that it's it's good for us, but we cannot watch more than 1 to 2 hours in a day. Thank you, sir. Okay, so Deepak Anand, you said we cannot watch or we should not watch. हम देख नहीं सकते कि देखना should नहीं not चाहिए. watch. यस, मॉडल ऑक्सिलरी ठीक है, मगर आपको करना होगा. सर हमें देखना you नहीं should. चाहिए. तो देखना नहीं चाहिए उसका क्या होगा अंग्रेजी? यू शुड नॉट Yes. वॉच, है ना. अगर कैन नॉट मतलब आप नहीं कर पाते हो. Yes, sir. We तो should not. कैपेसिटी की बात नहीं है, एक सोच की बात है कि आपने नहीं करना चाहिए, है ना. So that's that. So that's the model auxiliary that we discussed. Okay. Now, I'll not be able to invite more than a few because I need to give a bit of a feedback as well. अब देखिए, आपने देखा कि these are the expressions which you can use while you are talking. You can use these expressions one by one wherever it is suitable and befitting. You can use these expressions. So that's one. Now there are some region-specific issues, right? So say very quickly. I wish I could have more time, but very quickly. English is a very tricky language. It's not difficult, but tricky. Tricky in the sense कि कई चीज़ें जो हैं हम बोलते हैं तो एवरी रीजन जो है जहाँ भी बोली जाती है उसकी अलग अलग भाषाएं जो हैं उसमें यू कैन सी द इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक टू अ गुजराती स्टूडेंट, दे विल ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन फादर एंड फादर. फ है ना. सो गुजरात में हमारे फाफड़ा बहुत खाते हैं, तो फाफड़ा में फ आता है. सो दैट इज करेक्ट. फ यू लुक एट द लिप्स. आपके जो लिप्स हैं, होठ जो हैं, वो ऐसे जुड़ेंगे और फिर साउंड आएगा फ. तो वो गुजराती फ है, फाफड़ा वाला, है ना. सो मोस्ट गुजराती स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम विथ फ. सो बोलेंगे मेरे फादर आए हैं, विच इज रॉन्ग. यू शुड से माय फादर के. जब इंग्लिश का फ आएगा वो फ नहीं है, वो फ है. दैट मीन्स योर लिप्स विल नॉट टच, है ना. सो दैट इज कॉल्ड फादर. फाइन, राइट. यू लुक एट द लिप्स. वो आपके होठ जुड़ के जब खुलते हैं तो उस साउंड को फोनेटिक्स में कहते हैं बायलेबियल्स. बाय माने टू, लेबियल्स मींस लिप्स. दो लिप्स जुड़ के जब एक्सप्लोड होते हैं, बम के जैसे फूटता है, फ. तो ऐसे ब्रेथ बाहर निकल के जो साउंड निकलता है वो होता है गुजराती वाला फ. ऐसे और 5 हैं, प, फ, ब, ब, म. अंग्रेजी में भी है मगर सिर्फ 4 है. कौन से हैं? प, ब, ब, म. फ जो है इंग्लिश में वो फ नहीं है, वो क्या है? फ है. मतलब आपके होठ जो है वो टच नहीं होंगे. वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, 5 नॉट 5, राइट. क्या होगा? फादर, नो. सही होगा फादर. आपके होठ जो है वो छुएंगे नहीं. तो दैट्स अ गुजराती रीजन प्रॉब्लम. इफ यू लुक एट अ स्टूडेंट जो गुजराती रीजन में, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बिकॉज फ इज वेरी वेरी हिंदी में भी है मगर गुजराती रीजन में यू कैन सी दिस प्रॉब्लम बिगर. सो वो आप बीइंग अ गुजराती स्टूडेंट्स, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर स्पीकिंग, है ना, व्हेन यू से फादर, लोग समझ जाएंगे यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर. बट व्हेन यू स्पीक फादर तो वो गलत होगा प्रोनाउंसिएशन, है ना. सो गुजराती स्टूडेंट्स कैन टेक केयर ऑफ दिस फ साउंड. सो फादर, फाइन, एक्सेट्रा. Right. So that's one
typical issue. There are many, but within limited time हम ये दो चीजें देखना चाहेंगे. So that's for Gujarati students. There are elongated sounds also that you can take care. Elongated मतलब mother, mother. This is typically Gujarati. Mother is mother. Mu नहीं है. Ma, mother. Right? So that's mother. So it's again typically Gujarati video students may have this issue. So you can take care of that. Other issue which the students from the Hindi belt, that is UP, Bihar, so that region has this problem of idj. It is my pen. So it's not idj, it is, है ना? तो idj जो है, I think in some region of Gujarat also you have this pronunciation called idj. It is good. No, it is good. है ना? तो idj is something that you can take care. You can be also careful with pronunciation such as school. School. How do you say? I think Hindi belt. When I say Hindi belt, मतलब जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है इंडिया में, like UP, Bihar, and that some part of MP also, Madhya Pradesh also, where Hindi is spoken. And when there is a Hindi influence, जब आपकी हिंदी मातृभाषा होती है, तो उसकी थोड़ी जो असर है वो आपकी अंग्रेजी पर भी होगी. And that influence is this school. So in Punjab belt also, Haryana, Punjab, Rajasthan also, you will hear people saying school. Touch screen. Screen को क्या कहते हैं? Screen बोलते हैं. So that's a problem. है ना? तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो you can come out of it. So it's not touch screen. It's screen. Screen. तो S के साउंड में वो थोड़ी गलती होती है in that region. तो उस region में वो थोड़ा इश्यू होता है. So आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से आप बाहर निकल आएंगे. आपकी मातृभाषा है वो आपकी मातृभाषा है, इसको माँ का दर्जा दिया जाता है. रिस्पेक्ट योर मदर लैंग्वेज, आपकी गुजराती हो, हिंदी हो, दैट टू बी रिस्पेक्टेड. मगर बिकॉज ऑफ योर गुजराती और से हिंदी, आपकी अंग्रेजी जो है कई बार अफेक्ट हो जाती है, विच इज नॉर्मल. मगर नाउ यू नो, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने आई ट्राई टू डिस्कस विथ यू, तो दैट यू कैन टेक केयर. फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन इन इंडिया इज द एक्सप्रेशन सच एज walked. Walked, जो walk का past tense होता है ना, it's not walked, it's walked, right? So that's there. So ed जो है उसमें वो अलग कर देते हैं. तो if you can take care of that, I'm sure it will help you. ठीक है? So वो pronunciation is something that you can improvise either by attending some phonetic sessions, अगर जरूरत हुई तो will take, or you can take care of your listening. जब आप सुने तो अच्छे से सुने कि जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी जिसकी ठीक ठाक है वो कैसे बोलते हैं. सो इफ यू आर अ गुड लिसनर, देन योर स्पीकिंग विल बी इजियर. इट्स लाइक स्पीक, दिस लिसनिंग इज योर इनपुट, है ना? जैसी अंग्रेजी आप सुनेंगे ऐसी आप ग्रेजुअली बोलना शुरू करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू सम ऑफ द वेरी गुड से इंग्लिश, इफ पॉसिबल समथिंग विच इज रिलेटेड टू से इंडियन कॉन्टेक्स्ट. जैसे कि I think yesterday somebody was asking that what are the listening things that I can do. So I would suggest TED talk. I think all of you know TED Talks. TED का नाम सुना है? Yeah, TED Talks. So TED Talk is actually a platform where people from various fields, the experts, would come and speak for 20 minutes maximum. 18 to 20 minutes is the time that is given to them. Right, and then they'll speak about a topic for 20 minutes or so, right? And very good English would be there. Plus, it will be about some technical topic which you may find useful. So that you can try. So see if you find some talks where you find subject of your interest, and that you may find interesting. So that is one way you can input. Some of you are suggesting that can we go for movies. Well, I'll not recommend movies for the beginners, because when you talk of movies, that means there are characters, there are let's say fight scene, romantic scene, action, jagda ho raha hai. So there it's not say an English for the beginners, है ना? वो नेटिव स्पीकर है जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो लोग बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं. So that way it will be difficult for the beginners. बिगिनर के लिए क्या होना चाहिए? समथिंग विच इज फेमिलियर, जो टॉपिक आपको पता है. फॉर एग्जांपल टुडे सम ऑफ यू टोल्ड मी अबाउट टेलीविजन, सम ऑफ यू टोल्ड मी अबाउट ब्लूटूथ. तो एक छोटा सा सेशन देखिए आप यूट्यूब पे जो ब्लूटूथ पे हो, है ना? 5 मिनट कोई बोल रहा है इंग्लिश में,
about YouTube, about Bluetooth. Now you already know about Bluetooth, आपको Bluetooth पता है ना? मगर उसके बारे में जब कोई अंग्रेजी में कहता है तो कैसे कहता है? जैसे कि आज मैंने कोशिश करी कि हेडफोन क्या है, फीचर्स क्या है. आई टोल्ड यू इन 5 minutes, राइट? नाउ किसी को सुनिए जो टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है अपनी लैंग्वेज में. सो जब वो अंग्रेजी में ट्राई करते हैं तो कैसे बोलते हैं? अगर ये देखोगे तो आपके कान जो है वो अच्छे होंगे, राइट? सो इफ यू आर गुड एट लिसनिंग तो आपकी स्पीकिंग जो है वो ग्रेजुअली अच्छी हो जाएगी. सो आई एम श्योर it will help you. So try and work on your listening. So that will be as is your input, so would be your output. जैसा अच्छा आप सुनोगे ऐसी अंग्रेजी आपकी ठीक ठाक धीरे धीरे होती जाएगी. अगर आप गुजराती से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ी अंग्रेजी आपकी ठीक ठाक नहीं है तो छोड़ मत दीजिएगा, सुनिए अच्छे से, थोड़ा अच्छा पढ़िए और जहाँ भी ऐसा मौका मिले तो पार्टिसिपेट करिए. गलतियाँ होंगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन गलती जो हमने आई थिंक आज देखी, कल भी देखी थी, इट हैव. कोई बता रहे थे कि ये जो डिवाइस है उसमें ये चीजें होती हैं, है ना? तो किसी ने कहा कि इट हैव 2 kinds, इट हैव यूजफुल, इट हैव ये. तो ठीक है, ये इट हैव, इट के साथ हैव ठीक है ना? बताओ, ही, शी और इट के साथ हैव आएगा? नहीं आएगा. उसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा. ठीक है. अच्छा, ही के साथ तो हैव आ सकता है ना, ही हैव नहीं आएगा. शी हैज, ही हैज, इट हैज. ठीक है. तो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी बेसिक. आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, मगर कुछ झच नहीं रहा है. और ऐसा नहीं है कि जिसने ये गलती करी है उसको पता नहीं था, है ना? बिकॉज बोलते समय वो गलती हो जाती है. तो उसके लिए जरूरी है कि आप खूब सुने. जब आप अच्छा सुनेंगे तो योर ईयर शुड बी ट्रेन्ड. आपके कान जो है वो सुनने के लिए आदी हो जाएंगे. एंड देन व्हेन यू स्पीक तो वो नेचुरली आ जाएगा ना. जैसा आप पढ़ने में सीधा बता दो कि भाई इसके साथ तो हैव नहीं आएगा, है ना? आपको पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं. व्हेन यू आर स्पीकिंग इट नीड्स अ बिट ऑफ अ प्रैक्टिस. तो वो थोड़ी चीजें अगर आप देखेंगे सो आई एम श्योर यू विल एक्सेल, आप आगे बढ़ पाएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग, है ना? ये अंत नहीं है. यहाँ से आपकी अंग्रेजी की जो जर्नी है वो शुरू होती है. वॉइस आर नॉट एबल. अच्छा, किसकी वॉइस मुझे नहीं पता है, मगर कोई बता रहे हैं. एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आई डोंट नो. ठीक है, मेरी तो आ रही है. आई थिंक सम ऑफ यू हैव द माइक्रोफोन इश्यूज, सो दैट्स फाइन. लेट मी वेरी क्विकली टेक योर अटेंडेंस. Thank you for clarifying that I'm audible. Chaliye, so I'll take your attendance very quickly. Listen carefully, and when your name comes, please, है ना? चलिए, Ravi. Do we have Ravi Kumar? You're there, Ravi Kumar? Present, sir. ठीक है. चलिए, do we have Ramji Kumar? Ramji Kumar? नहीं है. चलिए, जय डोबरिया. Yes, sir. Okay, Rakesh Kushwaha. Rakesh Kushwaha. No. Janisha Patel. Janisha Patel. Present, sir. Okay. Guddu Kumar. Guddu Kumar. Ashutosh Kumar. Okay. Hariom Kumar. Hariom Kumar. Okay. Harshvardhan Soni. Okay. Abhishek Kumar Tiwari. Okay. Sonu Kumar. Sonu Kumar. Can I leave, sir? हाँ, जिनका हो गया है they can leave. सोनू कुमार. ओके. मनीष कुमार. ब्रिज पारेख. ब्रिज पारेख. Present, sir. ब्रिज इज देयर. अभिषेक राज. अभिषेक राज. Present, sir. Present, sir. ओके. शिवानी बा. शिवानी बा भट्टी. शिवानी बा is there? Present, sir. Okay, she is there. Okay, do we have Jai Dave? Yes, sir. Okay, do we have Dhaval Bhatti? Dhaval Bhatti. Present, sir. ठीक है. Do we have Krishna Khoot? Krishna Khoot. Present, sir. Okay, then do we have Ravi Rathod?
Yes, sir. Ravi Rathod is there. ठीक है. Do we have Miraj? Miraj? Present, sir. Okay. Do we have Rohit Kumar? Rohit Kumar? Present, sir. Ankit Kumar? Do we have Ankit Kumar? Okay. Rishi Raj? Rishi Raj? No. Animesh Raj? No. Rakesh Kumar Shah? Rakesh Kumar Shah? Present, sir. Okay. Nikhil Nigam? Nikhil Nigam Sharma? Nikhil Nigam Sharma? Okay. Vishal Kumar? Vishal Kumar? Okay. Awadh? Present, sir. Okay, Awadh is there. Do we have Prince Prasad? Prince Kumar? Okay. Do we have Girdhar Kumar? Girdhar Kumar, are you there? No. Pankaj Kumar? Pankaj Kumar? Do we have Deepak Anand? Deepak Anand? Deepak Anand, are you there? Yes, sir. Okay. Do we have Mahadev Kumar? Mahadev Kumar? ठीक है. Venus Yadav? Venus Jadhav? Present, sir. Okay. Priyanshu Wadher? Yes, sir. Present. Okay. Present. Vivek Gupta? Yes, sir. Okay. Akshay Kumar? No. Navneet Kumar? Present, sir. Okay. And Shammi Akhtar? Present, sir. Okay. Miraj is present, I know. जिसका हो गया present, they can leave if they wish. Okay. Heth Mujapra? Present, sir. Present. Sure. Sarjil Juneja? No. Bhakti Dave? Okay. Khelan Sekhda? Sir. Okay. Then Present, Ronak. sir. Sure. Khelan is there. Ronak Babaria? Yes, sir. Babaria is there. Yes, We have Yusuf Rashid? Yusuf Murtaza Rashid is there? No. Hinal Satodia? Hinal is there. Her microphone is not working. ठीक है. Then Kishan Hirani? Kishan, are you there? Kishan Hirani? Present, sir. Okay. Raj Shah, are you there? Present, sir. Present, sir. Okay. Sure. Samarth Cooler? Okay. Krishna Ranjan, are you there? Okay. Vishal Kumar? 51, Vishal Kumar? No. Harsh Pechda? Present, sir. Okay. Deep Patel, are you there? Okay. रोहित कुमार present है, sir. हाँ जी. Hello. Jeel Kumar? Present, sir. Jeel Kumar is there. Present. Okay. Vishal Parsania? Oh, sorry, Panseria. Yes, sir. Vishal Panseria is there. Yes, sir. Okay. Kishan Bhimani? Kishan, are you there? No. Nisar Alam? Present, sir. Okay. Then Arvind Gupta? No. Then Smith Joshi? Yes, sir. Okay. Aditya Nakum? No. Hemant Kumar? Yes, sir. Puneet Kumar? Okay. Do we have Prashant Rajput? Yes, sir. Yes, Prashant. Yes, sir. Now you can mute yourself. Then we have Hemant Kumar is there. Then Sir, Prashant Rajput हो गया? Prashant Rajput. Yes, sir. Okay. Sir, Vansita रोहित कुमार हो गया, sir.
हाँ भाई, कितनी बार बताओगे? हो गया ना, हाँ तो कहा आपको। वंशिता परमार, वंशिता परमार। Present, sir. अजय सिंह, अजय सिंह। Present, sir. ओके। दीपक कुमार गिरी, दीपक कुमार गिरी। Present, sir. Present, sir. धर्मिल हिरानी, धर्मिल हिरानी। धर्मिल, are you there? Present, sir. Okay. Present, sir. Diya Vekaria. Present, sir. Okay. We have Divyaraj Parmar. Divyaraj Parmar. Divyaraj, are you there? Divyaraj Parmar, not there. Okay. Jigar James. Sir, Krishna Ranjan present, sir. हाँ, अभी रुको थोड़ी देर। Okay. Do we have Jigar James? Jigar Yes, sir. James. Yes, sir. Yeah. Okay. Pujan Donga. Pujan Donga. Yes, sir. Present. Okay. So your mark stop working when your turn comes, isn't it? For the assignments. No, sir. I am traveling, so network issue. Okay. So the network is very interesting, isn't it? So Dharmil Hirani is there, right? Okay. Shubham Kumar. Shubham Kumar. Present, sir. Yes, he was there. Okay. Raj Shah was also there. Navneet Kumar was also Sir, there. present. Raj sir, present, sir. Yeah, I know. Rahul Kumar is also there, right? Deep, Sir, Krishna Ranjan present, sir. IT. now it's done. ठीक है. So let's go back to Krishna Ranjan. मेरा हो गया सर, कृष्णा रंजन IT. हाँ, just a minute. Krishna Ranjan. Yes, present. ठीक है. Next. Okay, rest of you are there. Thank you, sir. Yes, you are there, Diya. I know. So those who are done can leave. Those who are done that their attendance can leave. And that's all for today. So